Plus, a product of Continental Biscuits. अपने आप जीगर्स कुछ भी करें, अब पहले से भी ज्यादा SMS फिर यू फोन के पैकेजेस पर चलें। बस अपने यू फोन से 100 मिलाएं और हासिल करें सिर्फ ₹3.99 में बेशुमार SMS रोजाना, या ₹6.99 में 1200 SMS पूरे हफ्ते के लिए, ₹25 में 2500 SMS 14 दिन के लिए, या फिर ₹80 में लातादाद SMS वो भी पूरे महीने के लिए। यानी जैसी जरूरत वैसा पैकेज। तो फिर आज ही अपनी मर्जी का पैकेज मुंतखब करें और यू फोन के सस्ते तरीन रेट पर जब चाहे जिस नेटवर्क पर चाहे जितना चाहे SMS करें। सनसिल्क का मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है जो बालों को really नरिश करता है और हर महीने मेरी बाल को 2 सेंटीमीटर लंबा करने में मदद करता है। Lusciously Thick and Long by Terry Charles और 40% एक्स्ट्रा सनसिल्क शैम्पू इसी कीमत में। अपने दोस्तों से रहो हमेशा कनेक्टेड विद लाइव फेसबुक अपडेट्स अपने होम स्क्रीन पर। अपडेट योर स्टेटस, अपलोड फोटोज एनीटाइम एनीवेयर। Every message brings us closer to the new Nokia C3। वक्त कितना कुछ बदल देता है। वो घर के आंगन में पीपल के दरख्त के नीचे सबका मिल बैठना आज भी याद है। आंगन टेढ़ा हुआ तो सितारा और महरून निसार स्टूडियो ढाई में होने वाली गुफ्तगू कब स्टॉक में बदल गई पता ही नहीं चला। लेकिन इतना कुछ बदलकर भी वक्त सब कुछ नहीं बदल पाता। यही है जिंदगी का प्लस, जैसे मेरा जीरा प्लस। मेरे जुमलों की तरह मुमकिन, मेरे लफ्जों की तरह ताजा और खस्ता, और मेरी तहरीर जैसा अनोखा जायका, जीरे का जायका। मेरा प्लस, वो का जीरा प्लस, a quality product of Continental Biscuits. अपने आप जीगर्स कुछ भी करें, अब पहले से भी ज्यादा SMS फिर यू फोन के पैकेजेस पर चलें। बस अपने यू फोन से 100 मिलाएं और हासिल करें सिर्फ ₹3.99 में बेशुमार SMS रोजाना, या ₹6.99 में 1200 SMS पूरे हफ्ते के लिए, ₹25 में 2500 SMS 14 दिन के लिए, या फिर ₹80 में लातादाद SMS वो भी पूरे महीने के लिए। यानी जैसी जरूरत वैसा पैकेज। तो फिर आज ही अपनी मर्जी का पैकेज मुंतखब करें और यू फोन के सस्ते तरीन रेट पर जब चाहे जिस नेटवर्क पर चाहे जितना चाहे SMS करें। यही है जिंदगी का प्लस। मेरा प्लस, वो का जीरा प्लस। Welcome back after the break. अब वक्त हुआ है कि हम मिले पाकिस्तान के लीडिंग ड्रमर गंदी से and see what he has to say about his music, sound recording and his drumming. मेरा फोन ले। You can tell. So, different symbols, different applications. This has a different application, therefore it has a different microphone on it, depending what I need to enhance. जो particular sound मैंने enhance करना है, जो मेरी एक signature style है, depending on that also I use different microphones and different miking techniques. I was very interested कि drums बनती किस तरह हैं, उसको record किस तरह करते हैं, उसको बजाते किस तरह हैं. तो basically जो kick drum की एक अपनी technique होती है. Many people like using large diaphragm mics. I, however, am using surface mic, which basically gives me that thump I need. Again, it's a specific sound I like, so this is one of those. However, just to get a more beefier low-end sound, I also utilize a large diaphragm microphone, which is kept 8 to 10 inches away from the kick drum, which gives me a lot of air. जब जो किक ड्रम जब मैं प्ले करता हूँ तो इससे हवा निकलती है और उस हवा sound travels through air. So when the air is released from this, it also is giving me that low end that I require. 70s की जो recordings थी, 80s की जो recordings थी, was actually dictated by the kind of hi-fi systems that the consumer had. और 70s और 80s में अगर आप नोट करेंगे उस वक्त स्पीकर्स काफ़ी बड़े होते थे.
hi-fi speakers आपके, so there was a lot of low end into it, and those are the kind of mixes that were in. So there were a lot of things that dictated sound, the quality of it, and again it was the curiosity of those people that sort of evolved everything, not just drums but everything, from your recording to your instrument to your playability. ہر چیزیں ایوالو وہاں سے بھی. We're talking about technology of the consumers having hi-fi systems. I think the iPod really messed that up, because اگر جو بھی میوزک میں iPod پہ سنتا ہوں اور جو بھی میوزک میں اپنے ہائی ڈیف اسپیکرز پہ سنتا ہوں, وہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, لیکن شاید کنزیومر کو وہ فرق محسوس نہ ہو. Playing techniques, I can go. So different parts of the drum will give you a different sound, a different tone. Same thing would go with all these toms. Again, there's a bell. So ہر چیز کی جو application ہے is the mics and everything is according to how you play and what you do and what sort of music you're playing. آپ کے پاس پرو ٹولز ہو, آپ کے پاس ایک ایس ایس ایل کا سیٹ اپ ہو, اینالاگ سسٹم ہو, وہ کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. جو آپ کے کان یا جو آپ کا دماغ رجسٹر کرتا ہے آپ اسی حد تک کر پائیں گے, اس کے بیونڈ آپ نہیں کر پاتے ہیں. آپ کل کروڑ پتی ہو جائیں, لیکن اگر آپ کو 2 روپے والی سوچ ہے تو پھر آپ کا کام تو وہی ہونا ہے. دیکھیں جی, میرے صرف 2 پیر ہیں. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر تیسرا پیر بھی ہے تو, لیکن فارچونیٹلی نہیں ہے. اور پیڈلز میرے 3 ہیں, if you can see. Again, various different music, different application. So this is 1, this is 2, and this is 3. کسی چیز کی کبھی کمی ہوتی نہیں ہے. اگر آپ نے ایکسکیوز ڈالنا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی, because I have known people who recorded great sounding drums on a regular 6,000 روپے کی مائکروفون اور ایک بیسک سا ریکارڈنگ سیٹ اپ. تو وہ کمی ہوتی نہیں ہے, وہ ہم ایک ایکسکیوز کرتے ہیں. مجھے یاد ہے لوگ کہتے یار ایک زبردست ایک سیکسوفون پلیئر وہ ٹیوب اسٹیشن میں بجا رہا تھا, اور میں سوچتا تھا کہ وہ کیوں ٹیوب اسٹیشن میں بجا رہا, why isn't he playing on stage? کیونکہ he has no discipline, he has no vision. You may be the world's greatest artist, someone who's probably can draw better than who's drawn the Mona Lisa, لیکن وہی بات ہے, جنگل میں مور کو ناچتے ہوئے کس نے دیکھا؟ بات وہی آتی ہے کہ صرف اسکل نہیں چاہیے ہوتا ہے, صرف کریٹیوٹی نہیں چاہیے ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک بیلنس ضروری ہوتی ہے زندگی میں. آپ کسی ایک ایکسٹریم میں نہیں جا سکتے. How you want to get this further? میری ایک بڑی سمپل فلاسفی ہے زندگی میں, put up or shut up. If you hold credibility to something, آپ دکھائیں دنیا کو, کیونکہ that's not going to just raise the bar for everyone else. It's going to make your nation really proud.